Students, yeah, guys, please let me know if my screen is visible. Yes, sir, it's visible. Okay. So basically, in last session, we have completed conditional statement. That is, if elephant else statement. Now, after if elephant else statement, next type of a statement. Basically, three types of statements are there. Anybody who can tell me what are these three types of statement in Python programming? First type of a statement is known as conditional statement. So we have already covered conditional. So basically, in conditional statement, we are having if, and else. So this part we have already completed. After this, second statements are known as iterative statements. In iterative statements, we are having loops concept. Loops concept. So loops are nothing but your while and for and while. Third type of statement is known as transfer statement. In transfer statement, we are having break, comma, continue, and pause. So basically, in our complete Python programming, these three are the types of statements which are there. Out of which conditional statement we have already completed, that is if elephant. Next type of statement that we are going to start is iterative statement. But before understanding iterative statements, there are two functions which are very, very important because for every iterative, that means for each and every loop, we are going to use this concept. So two functions I am going to discuss now. First function is known as len function and second function is known as range function. These two functions are very, very, very important. If you are comfortable with these functions, then your for loop will be easy. That is the reason I am discussing. First function is known as length function, len function. So what this len function will do, this function is basically used to return the number of elements in a container. So anybody, what is containers? What are the containers we are having? Work budgets scam. In membership operator, we have discussed containers. What are these? Return the number of elements in a container. Any idea? So Like like list, tuple. yes, like list, tuple. So the data types which are storing more than one values, that is known as containers. Okay. List, tuple, set, dictionary, okay, a string, it is. So basically, whatever elements are present in this container, that you will get with the help of len function. So let me show you some example of it. For example, I am creating one list. X is equal to 1, comma 3, comma 3, comma 4, comma 5, 6. Now, in this list, how many elements are present in this list, guys? कितने element हैं इस list के अंदर? Anybody? So basically, one element, two element, three element, four element, five element, six. How many elements are there? Six elements are there. So that elements you will get, the count of the number of elements you will get with the help of this len function. So if I am going to run it, see, we will get answer as 6. 6 means in this list, 6 elements are present. In this list, 6 elements are present. The meaning of this len function is the number of elements which are present in a container. Whatever container you are using. In this container, how many elements are there? So 6 elements are there. That's why it is your now length of the list. How many elements are there in this list? 6 elements are there in this list. Same as it is if I am taking tuple. 1, 2, 3, 4. So how many elements are there in this tuple, guys? तो बता सकता है. How many elements are there in this tuple? Sir, 4. 4 4. elements are there. So if I am going to run this, you will get answer as 4. Okay. Now after this, if I am taking next container, that is your string type. So how many, because string is what? A string is a collection of characters. So in this, how many characters are there? In this, how many characters are there? 2.
two characters. One character is H and second character is I. Two characters are there in this. So if I am going to run this, two you will get because two characters are there. Okay. Next one is your set. X is equal to something like 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anybody? How many elements are there in this? Anybody? How many elements are present in this now? This is my set. So in this set, how many elements are there? 5. Hmm? Yeah, no, five. Okay. Anybody else? Sir, I think three. Three. Okay. See, do revision. Revision is very, very important. Why revision is important? Because I have already discussed the characteristic of set. What is that characteristic? The set characteristic is if your element contains duplicate, then by default duplicate elements will be removed. So here you will see 300, 300 two times. So it is a duplicate element. In result, you will see only one time 300 is present. So here also, if you are giving duplicate elements, then whatever duplicate elements you are giving, that duplicate elements will automatically remove. Automatically. So after removing the duplicates, how many elements are there? Three elements are there. So that three will be your result. That three will be your result. So if I am going to run this, your result will be after removing duplicates because C does not include duplicates. Duplicates are not there. Duplicate का नाम concept की चीज नहीं है set के अंदर. Duplicate allow नहीं करता है. That is the thing. So if duplicates are there, by default set will remove all the duplicates. All the duplicates will be removed by set. So this is your set example. So one thing is important. In case of set, duplicate elements will automatically remove. Right. Okay. This is a. After this, let me take one more example of dictionary. So when I am talking about dictionary, so in case of dictionary, you will get number of key value pairs. Because dictionary is a collection of key value pairs. So how many key value pairs are there? That you will get with the help of this. So let me show. So how many key value pairs are there in this? Two. Two key value pairs are there. Number of key value. So if I can tell you, this is your first key value pair and this is your second key value. So if you are using len function with respect to dictionary, so in that case, dictionary will return you key value pair, number of key value pair. How many key value pairs are there? One key value pair, second key value pair. So the result will be, if I am writing len of x, you will get result as 2 because two key value pairs are there. First key value pair is this one, second pair is. So this is your len function with all the containers. Now, if any question, any doubt is there, you can ask. Any type of doubt, anything you guys want to ask, you can ask. No doubt. At least please this not a chat box, guys. Everybody. Is it clear or no? Hmm. Okay, first minutes clear. What about others? Naman, Shweta, Abhinay, it is clear. Okay. Others? Any question in this alien function? So it is just returning the elements which are present. So how many elements are there? Six elements. That's simply result. How many elements? Four elements. Four will be your result. Two characters are there. Two is my result. Duplicate will be removed because it is a set. If it is a set, your duplicates will be removed automatically. So after removing duplicates, how many elements are there? Only three elements are there. In case of dictionary, it will give you key value pair. This is your first key value pair. This is your second key value. That is the thing. Okay. Now after this, we are having second function that is range function. Guys, length function is clear because in for loop, we will also use range function, this len function. Okay, so in programs also we will use this len function.
So if it is clear only, then I will go with the range function. Fine, I hope it is clear for everyone. Nobody is. Okay, coming to the range function, what basically range is doing. So this function is used to generate a sequence of number. Generate a sequence of number. What is the meaning of this? Suppose that I want to generate numbers from 1 to 10. So a sequence of number between 1 to 10 I want to generate. We will use range. I want to generate numbers from 10 to 50. You can use range function. So wherever you want to generate a number within a sequence, you will use range function. So for number generation, we are going to use this range function. Any number generation. For example, I want to generate numbers from 5 to 15. You can use range function. I want to generate numbers from 1 to 1000. You can use range function. So any number generation, if you want to do, you can do the help of range function. So the use of range function is this one only. This function is used to generate a sequence of. What is the syntax of this? How you can write range function? So the syntax of this is very simple. You will write range. Within this bracket, three arguments you need to pass. First argument is known as start, from where you want to generate number. What is your starting number? Then you will give what is your ending number. That means up till which point you want to stop. And then third one is known as step or gap. That means between the numbers, how many elements you want to skip. That is your third. So these are the three arguments that we need to pass with range function. First is start, second is and third is step or. Okay. Now after this, what is this start? So basically, start argument means from where we want to start to generate numbers. For example, I want to generate numbers from 5 to 10. So your starting number is 5. So you will write 5. Okay. After this, next is your ending. Ending. So ending means up till when? Up till when we want to generate. But here one thing you need to ask, you need to remember, end is exclusive in nature. That means जो भी end हम देंगे वो include नहीं करेगा. For example, अगर मैंने 10 दिया तो वो सिर्फ 9 तक नंबर जनरेट करेगा. अगर मैंने 15 दिया तो वो सिर्फ 14 को जनरेट करेगा. So end is in exclusive. एक्सक्लूसिव. तो नंबर जब भी जनरेट होंगे तो जो भी एंड तुम दोगे वो इंक्लूड नहीं होगा. ओके, दैट नंबर विल नॉट बी इंक्लूड. दैट इज अ थिंग. थर्ड वन इज योर, एंड वन मोर थिंग, दिस स्टार्ट इज ऑप्शनल. This is optional. This is optional. So it is not important that you will give a start value. So by default start value is, if you are not giving a start value, then by default start value is, किसी को पता है क्या होती है? 0. तो अगर नंबर नहीं दे रहे हो कहां से स्टार्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट. ठीक है. इफ यू आर नॉट गिविंग स्टार्ट वैल्यू, देन बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. कमिंग टू द सेकंड वन, एंड. दिस इज मैंडेटरी. दिस इज मैंडेटरी. ठीक है, ये मैंडेटरी होता है. अगर तुम एक आर्गुमेंट दोगे रेंज फंक्शन में, देन आल्सो इट विल कंसीडर एंड. If you are giving only one argument as well, in that case also it will consider that number as end value, not at beginning value. It will be end value. I will show you some example. Don't. After this, third one is known as step value. The step, or you can say gap value. What is the meaning of step and gap value? Basically, this means, okay. So how many elements we want to skip? We want to skip. अब इसका मतलब सुनो. अगर हमारा स्टेप की वैल्यू 1 है, then how many elements I am going to skip? 0 elements. If n value is 2, then how many elements I am going to skip? 1. If n value is 3, how many elements I am going to skip? It is equal to. So if n number is there, then how many elements I am going to skip, guys? N minus 1. So this is important. Let me take some examples so that you will be more comfortable with this. मैं क्या कर रहा हूँ? I am writing x is equal to list. Then I am writing range. Inside this, I am giving only one argument 10. Now इस केस में क्या होगा समझो. मैंने कोई स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी, बिकॉज स्टार्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है. तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो होगा वो 0 कंसीडर होगा.
कमिंग टू द एंड, अब क्या होता है जब हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट 10 लिखा है ना यहाँ पे, ये 10 हमारा एंडिंग वैल्यू होगी, ना कि स्टार्टिंग वैल्यू। अगर तुम एक आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो एक आर्ग्यूमेंट जो होगी वो एंडिंग वैल्यू होगी हमेशा। और एंडिंग वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव मतलब है अगर तुमने 10 दिया है तो वो 9 तक ही जाए। सो एंड वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 10। अब स्टेप वैल्यू क्या है? स्टेप वैल्यू इज योर बाय डिफॉल्ट वैल्यू। सो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। सो बाय डिफॉल्ट दिस इज ऑप्शनल, this is optional. So if it is optional, by default step value is, by default step value is, ठीक है। So here by default step value is 1. So I have not given any step value, it will be considered as, तो क्या नंबर जनरेट होंगे यहाँ पे? जनरेट जो नंबर होंगे वो होंगे, हमने स्टार्टिंग नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग विल बी 0. After 0, how many elements I need to skip? If step is 1, how many elements I need to skip? If step is 1, I need to skip 0 element. That means कोई element skip नहीं होगा, तो 0 के बाद डायरेक्टली 1 आ जाए। Then we will take 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 is exclusive. 10 जो है वो exclusive है, वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर तुमको 10 भी चाहिए तो मैं 11 तक जाऊंगा। If you want 10 as well, you need to take it as 11. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू, देख लो हमारे नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 to 9। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन क्या है? सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसे दे दूं, सपोज दैट आई एम राइटिंग 1,10। अब इस केस में क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग जो होगा वो 1 कंसीडर होगा और जो एंडिंग होगा वो हमारा 10 कंसीडर होगा। सो आफ्टर दिस क्या रिजल्ट आएगा? स्टार्ट हमारा 1 से होगा, 10 जो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा। कैसे? exclusive, that means it will go till 9 only. It will go till 9 only. Now if I am going to run this, see 1 to, your numbers which are generated is 1 to 9. One more example if I am taking here, suppose that I am writing 1, 10, 2। अब इस केस में क्या होगा? सोच, अगर 2 है हमारी वैल्यू, अगर स्टेप की वैल्यू 2 है तो कितने एलिमेंट को स्किप करना है हमको? Anybody, how many elements we need to skip if my n value is 2? 1. One element को skip. So how we will do it? So what are the numbers generated? Starting हमारी 1 से हो रही है तो 1 लिख लो पहले। क्या है? 2 एलिमेंट, 2 मीन्स एक एलिमेंट को स्किप करना है। 1 के बाद अगला एलिमेंट क्या होगा? 2, 2 को हम स्किप कर देंगे। 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3, 3। अब 3 के बाद फिर एक एलिमेंट स्किप हो जाएगा। 3 के बाद एक एलिमेंट स्किप करेंगे, 4 स्किप हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या होगा? 6 स्किप हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 के बाद एक स्किप हो जाएगा, क्या आएगा? बस दैट आर द नंबर्स विच आर जनरेटेड। सो ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली काम आता है कितने एलिमेंट हमको छोड़ छोड़ के नंबर जनरेट, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्किप, okay, for generating a number of sequence. So this is your range function. Basically it is simply used to generate a numbers. If you want to generate any kind of number, you will generate with the help of this syntax, with the help of this syntax. That is your range function. So if you are giving a step value as 3, in that case 2 elements will be skipped. If I am giving range value as step value as 3, I am writing something like, anybody just take a guess what is the result we will get now? What will be the result now? Just think. 1, 4, 7. Yes. Anybody else? 147. 1 4. Correct. Now how it is working? See, first thing is starting from 1. So 1 I have taken. After this, after 1, how many elements we need to skip? 3 means 2 elements we need to skip. 3 means 2 elements we need to skip. So after 1, 2 and 3 will be skipped. Then we are having, after 4, 2 elements again I need to skip. What are those elements? 5, 6. Then we will get 7. After 7, 2 elements again, that is 8 and 9.
एंड 9 अप टिल 9 इट विल, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं होता है, इट विल ओनली गो टिल 9. सो व्हाट इज माय रिजल्ट? 147 इज माय. Okay, let me take one more example. Suppose that I am writing something like 10, then I am writing something like 20, and I am writing 5. What is my result? In for loop, we will use range function. Millions of time we will use range function in for loop. Guys, what is my result? 10 and 15. Anybody? Sir, 10 and 15. What will be my result in this case? Sir, 10 and 15. 10 and okay. See, what is my starting? Starting is 10. So just write. After 10, 5 means we need to skip 4 elements. So after 10, 11 will be skipped, 12 will be skipped, 13 will be skipped, 14 will be skipped. After 14, next element will be your 5th. After 15, again 4 elements will be skipped. 16, 17, 18, 19. Now see, if I am writing 20, up till when it will go? It will go till 20 or it will go till 19? इट विल गो टिल 19 गाइस, क्योंकि एंड जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, एंड इज नॉट देयर, एंड इज एक्सक्लूसिव. सो इफ यू आर गिविंग 20 देन इट विल गो टिल 19 ओनली, it will go till 19 only. So your result will be 10 and 15 only. Clear Abhinaya? 20 will not be included. The reason is and is exclusive in nature. Exclusive means if you are giving 20, it will go till 19 only. If you are giving 20, it will go 19 only. Same as it is, if you are giving 10, it is going till 9 only. Here, if you are giving 10, it is going till 9 only. Here, we are giving 10, it is going 9 only. So, and is exclusive in nature. Exclusive means and is not included in your sequence. Okay. So, now the result will be 10 and 15. So, this is your range function. Now, in this range function, if you guys have any kind of doubt, you can ask. There are few more important points related to range function that I will write here. Clear, guys? Range function. Sir, what is the input input in range real, complex or No, variable, नंबर non-variable? जनरेट नहीं होंगे नमन वहां पे. ठीक है, ये सिर्फ इंटीजर नंबर्स को जनरेट करने के काम है. कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट नंबर जनरेट नहीं होते हैं. ठीक है, अगर तुम दे भी दोगे वो एरर दे देगा. ठीक है, Okay, sir. तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जनरेट होगा, इससे सिर्फ इंटीजर जनरेट किए जाते हैं. ठीक है, फाइन. सो आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज, so we have taken range function. Now after completing range function, we are going to start iterative statements. So these two things are important. Then we will discuss iterative statements. That is your loops. So in each and every loop, I will use this range function, and I will show you what is the use of this. So basically, iterative statement means some statement is there, and you want to execute that statement multiple times. Then you will use iterative statements or loop, or you can say repetition. If you want to perform some repetition multiple times, then you will use iterative statement. So what is iterative statement? If we want to execute a group of statement multiple times, then we will use iterative statements. So iterative statements are also known as loops. Okay, also known as loops. So this is your for example, let me take one example. There is one scenario I am taking so that you will be more comfortable with this. Suppose that I want to print hello world 1000 times. Okay, that is my requirement.
So if you want to print hello world 2 times, there are 2 ways to print hello world 1000 times. What are the 2 ways? First way is manually type manually type hello world 1000 times. That is your first. So your first way is you are manually typing hello world 1000 times. Second way is use iterative statements or use loops and write hello world only once and repeat hello world 1000. Now, which one is feasible, guys? देख के बता सकते हो क्या चीज फिजिबल होगी, क्या चीज यूजफुल होगी, कौन सी Second. भेजो? पहला वे तो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कोई ऐसा बंदा होगा जो 1000 बार हेलो वर्ल्ड लिखे, कभी नहीं लिखे। ठीक है, nobody is going to write hello world 1000 times in real scenario. Second way is what? Only one time I am writing and I am repeating that step again and again. So this step is specific. So if any statement you want to execute multiple times, you will use iterative statement in that. So iterative statements are nothing but repetition. If you want to repeat some statement, you will use iterative statement in that. So repetitive state. So one statement is there which is hello world. You want to repeat this statement any number of times. You will use iterative statements. So how many types of iterative statements are there in Python? Only 2 ways are there to write iterative statements. Okay. So types of iterative statements in, so first is known as for loop and second way is known as while. So only these are the 2 ways which are there. With the help of that, we can implement repetitive statements. Iterative statements are also known as repetitive statements because one statement I am writing and I am repeating that statement again and again. Again and again, I am repeating that statement. So that is your iterative statement. So one by one, we will discuss both the iterative statement. First iterative statement is known as for loop. For loop. When we will use for loop? If we want to execute, if we want to execute a group of statement, a group of statement, a group of, or you can say, if we are having a sequence, if we want to iterate over a sequence is your container. And one more thing, जो range function है, that is also a container. This range function is also a container. Okay. So here I have shown you written some container like here in container. So range function is also one container. Range function is also one container. Okay. So here also for loop, if you want to iterate over a sequence or a container, then we will use for. Then we will use for. Okay. What is the syntax of for loop? See, for I in sequence or container. Now, what is sequence and container here, guys? Sequence and container means यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ ब्रैकेट में, maybe it is a list, maybe it is a tuple, maybe it is a dictionary, maybe it is a set, maybe it is a string, maybe it is a range function. Anything. All these are your containers. So अगर तुमको आइट्रेट करना है किसी इनके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिपीटिशन चलाना है तुमको इन इन डेटा टाइप्स के ऊपर, तब हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं पाइथन की। इसके अलावा फॉर लूप का यूज नहीं। ओके, आफ्टर दिस वी विल राइट body or statement. That means whatever statement you want to write, you will write those statements. Body or, so this is the actual syntax of for. अब यहाँ पे I क्या होता है? Basically I is known as iterate. I is known as iterator. अब आइट्रेटर क्या होता है? आइट्रेटर का मतलब क्या है? जब हम सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट का मतलब होता है एक एक करके विजिट कर। जब हम सीक्वेंस के ऊपर एक एक करके चलेंगे, तब एक हर टाइम पे आइट्रेटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। दैट इज योर आइट्रेटर। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सपोज दैट, समझना इसको यहाँ पे, प्लीज गाइस अंडरस्टैंड दिस। Suppose that I am creating one list 1, 2, 3, 4, 5. Okay. This is my list. After this, I am writing for I in X.
Okay, after this I am printing my I value because I want to demonstrate what is I. I क्या है, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, अब समझ। फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा, क्योंकि ये लूप है, लूप का मतलब क्या है, ये रिपीट करे, ये चीज रिपीट करता रहेगा ये। अब समझ जाए, जब फर्स्ट टाइम ये रन होगा क्या करेगा ये, फॉर आई। आई क्या होता है, आई कुछ नहीं है, आई एलिमेंट होता है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 1। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 2। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 3। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 4। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 5। सो हर बार आइट्रेटर की वैल्यू आई की पे डिपेंड करती है। आई कुछ नहीं होता, आई जो होती है वो वैल्यू होती है सीक्वेंस। एक एक करके सीक्वेंस की वैल्यू को हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर आई, फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या है, 1 इन एक्स। एक्स क्या है हमारा, सीक्वेंस 1 2 3 4 5। आफ्टर दिस प्रिंटिंग आई। अब कोई बता सकता है यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई आई वैल्यू एट दिस पॉइंट। At this point, what is the value of I? I is nothing but sequence of element we are having. In that sequence, one by one, go each and every element of the sequence. So first time I am going till this one. So that is nothing but your I for the first. Okay. So here what it will print? It will print 1. Again when it will run, second item. Again when it will run, second item. So for 2, because I value is what? I value is 2 in second. सो एक एक करके ये लिस्ट के ऊपर जा रहा है, लिस्ट के ऊपर एक एक करके बढ़ रहा है। सो फॉर टू इन योर सीक्वेंस, सीक्वेंसेस 1 2 3 4। अगेन व्हेन नेक्स्ट केस इज कमिंग, प्रिंट आई। व्हाट इज माय आई वैल्यू एट दिस पॉइंट, आई वैल्यू विल बी योर, आई वैल्यू विल बी योर 2 एट दिस। ओके, सो आई वैल्यू इज व्हाट, आई वैल्यू इज, अगेन व्हेन आई एम रनिंग फॉर थर्ड आइटम, फॉर आई वैल्यू इज व्हाट, 3। बिकॉज देखो एक एक करके चल रहा है, पहले इसने 1 पे आइटरेट किया, फिर ये 2 पे आइटरेट करेगा, फिर ये 3 पे आइटरेट करेगा, फिर ये 4 पे। आइटरेट का मतलब होता है विजिट करना। ठीक है, पहले एक को इसने विजिट किया, फिर 2 को विजिट किया, फिर 3 को विजिट किया, फिर 4 को विजिट किया, फिर 5 को विजिट, ऐसे एक एक करके ये विजिट करता चला जाएगा सारे कुछ। तो आई की वैल्यू या कुछ नहीं, इसको बोला जाता है आइट्रेटर, क्योंकि फॉर लूप में क्या करते हैं हम, एक एक करके हर एलिमेंट के ऊपर जाते हैं। जो भी सीक्वेंस तुम दोगे उस सीक्वेंस के ऊपर एक एक करके जाएगा ही, तो उसी को बोलते हैं आइट्रेटर। So for 3 in 1 2 3 4 5, print I. So at this point your I value is 3। ऐसे ये 4 पे जाएगा, ऐसे ये 5। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट आएगा 1 2 3। हर आइट्रेटेड, दैट मींस रिपीटेशन का मतलब क्या है, रिपीटेशन का मतलब है एक बार जब रन हो गया फिर दूसरी बार भी रन होगा, फिर तीसरी बार भी रन होगा, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। तो अगर मैं ये कोड यहाँ पे लिखता भी, लेट मी शो यू, I am writing x is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है। For I in x, x is what, x is a sequence, sequence of which type, it is of list type, then I am writing print। अब क्या होगा, फर्स्ट पहली बार जब ये लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। अगेन जब रन करेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 2। अगेन जब रन करेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 3। अगेन जब ये रन करेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 4। अगेन जब ये रन करेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 5। अगेन जब ये रन करेगा आई की वैल्यू क्या होगी, 6। तो कितनी बार ये रन होगा, जितनी लेंथ होगी तुम्हारे सीक्वेंस की उतनी बार ये लूप रन, जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार ये लूप रन हो। देख 1 2 3 4 5 6। So I is your iterator which is going to iterate over your given sequence one by one. I is your iterator which is going to, I means iterator which is going to iterate over the sequence one by one. तो हर बार आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, 1। अगली बार जब रन करोगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, देन आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, देन आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ आई। And every time I am printing my I value, so what is my I value which is printed? For the first time I value is 1, so 1 is printed. Next time I value is 2, 2 is printed. Next time I value is 3, 3 is printed. Next time I value is 4, 4 is printed. Next time I value is 5, 5 is printed. Next time I value is 6, 6. That is it. Tell me this first example is clear or not? First example is clear, guys.
Yes, sir. If any question is there in this first example, please let me know. Any type of question you guys want to ask, you can ask. Fine. Let me take one more example. Suppose that I want to generate numbers from 1 to 100. अब देखो फॉर लूप से हम नंबर्स कैसे जनरेट और कैसे प्रिंट कर. I want to generate numbers from 1 to 100. That is our requirement. So how we will do it? Simply we will run one loop for I in. अब ये नंबर कैसे जनरेट होंगे, 1 to 100 कैसे नंबर जनरेट करेंगे, इसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन का यूज फॉर आई इन रेंज 1, 100. अब समझना ये रेंज 1, 100 क्या करे. ये रेंज 1, 100 बहुत सिंपल सी चीज है. ये नंबर जनरेट कर देगा 1 से लेके ऐसे सो ऑन 100. इसका सीधा सा काम सिर्फ इतना समझना ये क्या कर रहे हैं. ये रेंज 1, 100 क्या करेगा, ये नंबर्स जनरेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 100. अब इसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर देता हूँ, अगर मैं प्रिंट आई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कैसे चलेगा समझ. पहली बार इस सीक्वेंस में आई की वैल्यू क्या है, पहली बार इस सीक्वेंस में आई की वैल्यू क्या है, तो पहली बार इस सीक्वेंस में आई की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा 1. अगेन जब रन होगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 प्रिंट हो जाएगा. अगली बार जब रन करेंगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 आ जाएगा. अगली बार जब रन करेंगे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 प्रिंट हो जाएगा. Same as it is, it will do. So what this range will do? It will simply generate numbers. What are the numbers? These are the numbers which will be generated. And after generating these numbers, I am printing my I value. So I value is nothing but 1 by 1. After generating these numbers, 1 by 1, I is going to iterate over this. First time 1, then 2, then 3, then 4, then 5, like this. And if I am going to print this, if I am going to run this, see, between 1 to 100, your numbers are generated. So in real time, this is very in real time, this range function is very important. So generally, if you are having problems related to for loop, we will go with the range function generally. Okay, many problems you can solve with the help of range function directly. Okay, this is it. Ask your doubts in this if you are having. If any doubt is there, please let me know. Then we will discuss programs. Your basic programs we will discuss. Any doubt, guys? Anything you guys want to ask? You can ask. Fine. Let's take problem. Python program to print In odd numbers. previous, sir, in previous example, 100 is included or not? नो 100 इंक्लूड नहीं होगा, ये 99 तक ही जाएगा. मैं दिखाता हूँ. क्योंकि 100 जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, जो एंड नंबर तुम दोगे ना वो एक्सक्लूसिव रहेगा हमेशा. देखो 99 तक आया, ठीक है, Okay. एंड हमेशा एक्सक्लूसिव रहेगा. Now after this, Python program to print odd numbers between 25 to 60. That is our. Now how we will do? Very simple it is. What we will do? First we will generate numbers from 25 to 60. So how we will do it? For I in range of 25, 61, not 60. Why not 60? Because 60 is exclusive. तो मेरे को 61 तक जाना पड़ेगा. आफ्टर दिस अगर मैं ये चीज लेता हूं और प्रिंट आई करता हूं, क्या करेगा, ये सिर्फ नंबर जनरेट कर देगा. व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली जनरेट नंबर्स फॉर. नाउ इन दीज नंबर्स, ये क्या है हमारी, ये आई की वैल्यू है. फर्स्ट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 25. नेक्स्ट टाइम व्हाट इज माय आई की वैल्यू 26. नेक्स्ट टाइम व्हाट इज माय आई वैल्यू 27. नेक्स्ट टाइम व्हाट इज माय आई वैल्यू 28, then 29, then 30, then 31, like that. So every time your I value is there. Now, once your numbers are generated, how you can filter out the odd numbers? So for filtering out the odd numbers, I will put condition. If whatever number is coming from this I, if I modulus 2,
नॉट इक्वल टू 0. अगर I मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट मीन्स इट इज अ odd number, and I will write print statement inside this if condition. Inside this if condition, and if I am going to run this, you will see all the numbers are odd numbers. Odd numbers, all the numbers are odd. Okay, that is the thing. So what I am doing is, for I in the range, what this range function will do, it will generate 25, 26, 27, 28, like that. It will generate numbers up till 60. After generating this number for the first time, what is my I value? 25. 25 modulus 2 not equal to 0. Yes, 25 modulus 2 not equal to 0. That's true. Print I. What is my I value? 25 is my value. 25 is. Then again it will come to 26. 26 modulus 2 not equal to 0. It is false. So if it is false, print I is not true. Okay, like this. Is it clear or not, guys? If any doubt is there in this, please let me know, guys. Any type of question, anything you guys want to ask in this? Yes, Simran, it's clear. Naman and Simran. For you, Yes, sir. Naman, what about you? Yes, sir. Clear, sir. Let me take more examples. Python program to print all numbers between 1 to 500, or between 1 to, don't take 1, between 99 to 499, which are divisible by 7 and. तो हमको नंबर सारे प्रिंट कराने हैं किस रेंज में? 99 और 499 के बीच, जो कि डिविजिबल हो जाते हैं 7 और 3. तो हमको ऐसे प्रिंट कराने हैं जो कि डिवाइड कंप्लीटली हो जाए 7 और 3. दैट इज अवर रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट? All numbers we need to print between 99 and 419. All numbers which are divisible by 7 and. So what is our first step? First step is generate numbers. So how we will generate numbers? For I in range of 99 to 99 to 500. 500. Correct. Now what this will do? This code will generate simply your numbers. After generating these numbers, our next objective is, you need to check whether this I is nothing but 1 by 1 number which are generated. We will check whether that number is divisible by 7 and 3 on. So how we will check it? We will put one condition. If I modulus 3 is equal to 0, and I modulus 7 is equal to, अगर दोनों चीजें ट्रू हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर आ रहा है ऊपर से, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज. दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज 3. दैट्स इट. If I am going to run this, you will see all the numbers we will get. These are the numbers which are multiple of 7 at 3. 7 at, all these numbers are multiple of 7 at. That is the thing only. Simple. What we have done, first we have generated numbers from 99 to 500. After generating those numbers, I am putting one condition. If I value is nothing but your 1 by 1 numbers which are generated, like 99, then we are having 100. So 1 by 1, it is going to iterate over these numbers. First 99, then 100, then 101, like that. And then I am checking condition if I modulus 3 is equal to 0 or no. If it is equal to 0 and this is equal to 0, both conditions are true, I am printing my I value. Why I am printing my I value? Because both these conditions are true. That means number is multiple by 3 as well as number is multiple by 7. And if both the conditions are true, I am printing my I. That is it. Clear, everybody? Let me take more examples. Next Sir, example. what if we take one time at I modulus 21 is equal to 0? That is also would be correct.
ठीक है, क्योंकि 7 और 3 से वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 से मल्टीप्लाई। अगर तुम सीधे 21 से का मॉडुलस चेक कर ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके ठीक सर। है। अगर 21 से भी हम चेक करेंगे तब भी ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही वो नंबर होगा, जो जो भी नंबर होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा कंप्लीटली, तभी वो डिवाइड करें। नॉट डिवाइड 7 3 21। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम to print all numbers, all numbers between 1 to 500 which are divisible by 7 but not by but not by 11। ये कैसे? 7 से डिवाइड हो जाए बट 11 से डिवाइड, दैट इज अवर, कैसे कर? कोई लोग अप्रोच बताओ इसका? एनीबॉडी? व्हाट वी विल डू, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? Sir, where we are using फर्स्ट the condition. यस सिमरन, गो अहेड। Yes, sir. Where we are using the condition in the previous example and and हम यूज करेंगे, बट जहाँ पे हम आई मॉड्यूलस 7 इक्वल टू 0 कर रहे थे, वहीं पे हम आई मॉड्यूलस द नंबर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। करेक्ट, ठीक है, बट एक और चीज चेंज होगा, जो नंबर जनरेट होंगे वो 1 से 500 के बीच में होंगे। यहाँ पे हाँ जी सर, 99 टू बोलिए। 499 है, यहाँ पे 1 to 5 है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। तो व्हाट वी विल डू, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 501। अब इसके बाद क्या करेंगे, विच आर डिविजिबल बाई 7, तो दैट मीन जो भी नंबर होगा उसको हमको चेक करना है 7 से पहले, तो हम पहले 7 से चेक करें। सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड आई मॉडुलस 7 आई मॉडुलस 11। अब ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सो नॉट डिविजिबल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो भी नंबर आ रहा है उसका नॉट डिविजिबल, उसको हम मॉडुलस कर रहे हैं 11 से, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स our condition is true, you will get your print I। These are the numbers which are multiple of 7 but not multiple of 11, multiple of 7 but not multiple of 11, these are the numbers. That is it, clear guys? Okay, now after this next program is what? Next program is Python program to print table of 5 or table of any number I am taking, I will ask end user to give the input। सो आप टेबल कैसे जनरेट, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। टेबल क्या होती है, 2 into 1, अगर दो का नंबर ले रहे हैं तो 2 into 1 विल बी 2, देन 2 into 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 4, लाइक दिस। तो ऐसा हमें प्रिंट करना है। अब ये कैसे प्रिंट करेंगे, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अब एक चीज तुम देखो, ये वाला पहला वाला जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको तो सेम एज इट इज 2 ही ले लेंगे। अब ये जो 1 2 3 आ रहा है, ये 1 2 3 हम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये 1 2 3 जो होगा, इसको इसका काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर जनरेशन। तो हम क्या करेंगे समझना, एक नंबर मैं ले रहा हूं एज एन इनपुट, पहले तो num इज इक्वल टू इन इनपुट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक नंबर एज एन इनपुट, एंटर नंबर। अब जब नंबर इनपुट हमने ले लिया, इसके बाद क्या करेंगे, our first job is to generate these numbers 1 2 3, ये जो दिख रहा है ना 1 2 3, इन नंबर्स को जनरेट करना। और ये कहां तक जाएंगे, कोई भी टेबल होगी वो कहां से स्टार्ट होगी कहां तक जाती है गाइस? अगर टेबल हमको प्रिंट करानी है तो कहां से स्टार्ट होगी कहां तक जाती है? वन टेबल टू विल टेन स्टार्ट फ्रॉम 1 गो अप टिल 10, 10 मींस वी विल गो टिल 11। ठीक है, वी विल गो टिल 11। अब इसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये सिंपल नंबर जनरेट कर, नंबर जनरेट करने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपना नेक्स्ट स्टेप होगा मैं प्रिंट कराऊंगा जो भी नंबर है हमारा, जो भी नंबर होगा उसको मैं पहले लूंगा, ये हमारा नंबर है। ठीक है, तो मैंने नम सेम एज इट इज ले लिया। ठीक है, इन टू क्या लेंगे, 2 हमारा नंबर हो गया, और आई क्या है, आई कुछ नहीं, जो नंबर्स हमारे यहां से जनरेट हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही तो नम इंटू आई अगर हम करते हैं, तो पहली बार में नम की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की टेबल ले रहे हैं तो 2 1 जा 2,
देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देन 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो टेबल इज डन। देखो 5 लिया मैंने, 5 की टेबल आ। अगर तुमको ऐसे भी प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे भी प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे कराएंगे? देखो नम तो हमारा सेम रहेगा, नम को ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉमा पुट कर। कॉमा पुट करने के बाद हमको स्टार चाहिए तो स्टार ले लो सेम एज इट इज। स्टार के बाद क्या लेना है हमको, हमको लिखना है आई। तो आई को सेम एज इट इज लिख, आई को क्या करो सेम एज इट इज लिख दो। अब इसके बाद क्या होगा, हमको इक्वल लगाना है तो इक्वल लगा दो। अब इक्वल लगाने के बाद क्या है, ये जो रिजल्ट आ रहा है 246, कहां से ये रिजल्ट आ रहा है 246? 246 कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है नम इंटू आई का। दैट्स, अब देखो मैंने दिया 5, देख टेबल आ गई सेम एज इट इज इस तरह से। क्या किया मैंने, नम तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू, तो नम को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। स्टार को हमने एज अ स्ट्रिंग बना दिया। आई वैल्यू जो है वो कुछ नहीं, वो जो यहां से आई वैल्यू आ रही है वो हमारी आई वैल्यू है। इक्वल हमारा कांस्टेंट रहेगा पूरे में, तो इक्वल को हमने कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और जो जो ये नंबर आ रहा है ये कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है नम इंटू आई का। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर पूरी टेबल ऐसे करनी है तो ऐसे टेबल प्रिंट कर। दैट्स इट। आस्क योर डाउट्स। This range function, if the range function is clear, na, rest everything is very easy. Because what it is doing, this range function is generating these numbers. After generating these numbers, I is nothing but one by one, it is going to iterate. First time 1, next time 2, next time 3, next time 4, next time 5. One by one, it is going to iterate. And that is nothing but your I value in every iteration. Huh, guys? Is it clear? Any question in this? In this way, you can print any table. I want to print table of 4. You can print. Error will come because 4, I have given something. Input is 1. 4. See, 4 table. Same as it is 5 table. You can take 5 table, 10 table, 50 table, whatever table you want, we can take in this way only. So 15. That is 15 tables. ठीक है, तो ऐसे किसी की भी टेबल हम लोग प्रिंट कर सकते, कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा फॉर लूप मैंने बताया, नेक्स्ट सेशन में फॉर लूप के और डिस्कशन होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस फॉर लूप पे थोड़े कराऊंगा, फिर वाइल लूप पे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर किसी को डाउट है किसी तरह से तो, कैसा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो हाँ गाइस, एक एक करके अपने डाउट्स रखो। यस, या एनी काइंड ऑफ डाउट इफ यू गाइस वांट टू आस्क कैन आस्क। Sir, I related to first day class. Query related to first day class. हाँ हाँ, बताओ क्या क्वेरी है। सर प्रिंट 10 20 30 40 50, और सर उसके बाद शेप आया था, शेप के बाद अंडर स्क्रॉल सेमी कॉलन के अंदर, उसमें सर ये शेप का क्या मतलब हुआ वो समझ में नहीं आया था। सेल्फ, सेल्फ कहाँ पे आ गया वहाँ? सेल्फ नहीं होगा, एससीपी होगा। हाँ SCP। हाँ देखो मैं बताता हूँ। देखो प्रिंट पे क्या होता है, अगर तुम मल्टीपल चीजें प्रिंट करा रहे हो, मैंने दिया 10 20 30, मैं इसको रन करता हूँ। जब इसको रन करोगे तो तुम देखोगे हर एलिमेंट जो है वो सेपरेटेड हो रहा है स्पेस। अब ये स्पेस से क्यों हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसमें एक पैरामीटर होता है जिसको बोला जाता है एससीपी। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो एससीपी दिख रहा है, ये पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर करता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालते हो तो वो स्पेस से सेपरेट हो। ठीक है, मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को अपना कोई सेपरेटर डालना है, मेरे को ये स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के इस एससीपी की वैल्यू को चेंज करूँ। अब ये वैल्यू कोई भी चेंज हो सकती है, मैंने दिया हाइफन है, आप हाइफन दे दो। तो जब आप हाइफन दोगे तो ये हाइफन क्या करेगा, 10 और 20 के बीच में इंस्टेड ऑफ स्पेस इट विल टेक हाइफन एज अ वैल्यू। सो हाइफन हाइफन आ जाएगा 10 20 के बीच में। फिर 20 और 30 के बीच में अगेन हाइफन हाइफन आ जाएगा। देन 30 और 40 के बीच में अगेन हाइफन एंड हाइफन आ जाएगा। देन 40 एंड 50 के बीच में अगेन हाइफन एंड हाइफन आ जाएगा। तो ऐसे ये फ्लो चलता है। तो एससीपी का काम यही हो। देखो
तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, अगर तुमने मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हो प्रिंट फंक्शन के अंदर, मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर तुम प्रिंट करते हो, तो हर एलिमेंट जो होता है वो स्पेस से सेपरेटेड होता है। अगर तुमको स्पेस नहीं चाहिए, तुमको कुछ और चाहिए, तो तुमको ये वैल्यू जो है ये चेंज करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो स्पेस होती है। मैं दिखा भी देता हूँ इसकी वैल्यू, देखो। प्रिंट, हाँ, ये देखो, एससीपी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्पेस है, एक स्पेस है इसके अंदर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये स्पेस से सेपरेट होते हैं। अगर तुमको ये नहीं चाहिए, मान लिया तुमको स्पेस नहीं चाहिए, तुमको अपना कुछ देना है, तो तुम अपना दे सकते हो। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस एससीपी की वैल्यू को चेंज करना। बस यही एससीपी का काम है। ठीक है। यस सर, क्लियर सर। अदर डाउट एनीबडी? कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो। नो डाउट? देन फाइन, आई सर थिंक नो प्लीज डाउट। शेयर द लिंक ऑफ दैट कोलैब। दिस वन, दिस यू आर आस्किंग? सर ये फुल कोलैब, हाँ, फुल कोलैब में भी कोलैब शेयर लिंक। कर। प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस द सर ओनली हम गेम। लोग जैसे हम लोग सर हम सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास का, तो फिर ये प्रॉब्लम आ रहा है बहुत बार। बहुत सारे स्ट्रिंग एरर आ जाते हैं, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ इसी से जाता तो है, सीखोगे जैसे ना। कभी सेमी कॉलन छूट जा रहा है। हाँ देखो, इसी के लिए, इसी से तो सीखोगे। जब गलतियां होंगी तभी तो सीखोगे। गलतियों से इंसान सीखता है ना। यस तो सर। अभी गलतियां आ रही क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो गलती अगर एरर आ रही तो कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसा। ठीक है, कोई, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अब नया, अभी नया, वी कैन डू इट लाइक दैट। ओके, you are storing that sum and then you are printing, that is also correct. Okay, your output will be same only. You are storing this multiplication into z variable. I am directly printing. Both are correct. We can use this as well. Okay, Abhinav. We can use this as well. Both will give you same result. Fine, I think. Okay, then that's it for today. Bye bye, everyone. Can I wind up the session, sir? Yes, yes. Yeah, thank you so much, sir.